Assalamu alaikum, welcome to my Neurohub. This is your teacher Sanobar and I'm back again with another video. And in today's video, I am going to discuss the significance and clinical interpretations of the midbrain. और आज हम क्यों कोई क्रेनियल नर्व नहीं पढ़ रहे बल्कि मिड ब्रेन की अचानक से आ गया है पढ़ने का. द रीज़न इज़ द सीक्वेंस से हमको लेके चलना है. हमने ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक नर्व पढ़ी जो कि ब्रेन स्टेम से नहीं थी. इसके बाद जितनी भी 10 क्रेनियल नर्व्स है दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम द ब्रेन स्टेम. Out of these 10 cranial nerves, 2 which is oculomotor and the trochlear nerve is coming from the midbrain. तो हम इन दोनों cranial nerves को पढ़ चुके थे, इसलिए अब हम midbrain की complications करेंगे. तो let's move on to our whiteboard to discuss today's topic. तो चलते हैं significance of midbrain की तरफ. Why is it significant? It has reflex centers which are superior colliculus and inferior colliculus. It has red nucleus and substantia nigra that assist in the motor activities. It has important descending and ascending tracts, corticonuclear, corticospinal and tectobulbar tracts. And also it has cranial nerve 3 and cranial nerve 4 nuclei that helps in ocular movements and accommodation. Now coming to the complications of the midbrain. It is categorized in the three things: trauma, the cerebral aqueduct blockage and the vascular lesions. सबसे पहले trauma पे आते हैं. Sudden movement of head हो in comparison to the cerebrum जिसकी वजह से बेंटिंग, ट्विस्टिंग, स्ट्रेचिंग हो सकती है मिडब्रेन की. सबसे पहले इसका इफेक्ट आएगा oculomotor न्यूक्लियस पे. तो ipsilateral पैरालिसिस ऑफ द एक्सट्रिंसिक मसल ऑफ द आई होगा, एक्सेप्ट द lateral rectus, इसको ये सप्लाई नहीं करता. The muscles are superior rectus which assists in the superior movement of the eyeball, the medial rectus which causes the adduction, the inferior rectus which causes the depression of the eyeball, the inferior oblique muscle and the levator palpebrae superioris. अभी inferior oblique muscle जो है वो जो मूवमेंट करवाता है वो lateral and superior होती है. मतलब superior rectus के साथ ही आई जो है वो अपर की तरफ मूव होगी. This movement is called excyclotorsion. And if it involves the Edinger-Westphal nucleus, the dilatation of the pupil occurs and there is loss of accommodation of the eye in response to the light. If it involves the trochlear nerve nucleus, then there is paralysis of the superior oblique muscle of the contralateral side of the eyeball. Why? Just remember why it's the contralateral side, because trochlear nerve immediately decussate after leaving the brain. Look at these arrows. This will cast somewhat a impression of decussation. Now coming to the second problem, which is blockage of the cerebral aqueduct. Cerebral aqueduct क्या करती है? फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करती है थर्ड और लेटरल वेंट्रिकल से. जो थर्ड और लेटरल वेंट्रिकल के अंदर CSF बनता है वो जाता है फोर्थ वेंट्रिकल पे थ्रू द cerebral aqueduct. देखिए इस पिक्चर के अंदर cerebral aqueduct जो है वो ब्लॉक हुई हुई है. इसकी वजह से क्या होगा कि CSF का फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइड्रोकेफेलस भी हो सकता है. If there is a tumor in the midbrain, this can compress the cerebral aqueduct and congenital hydrocephalus भी इसका cause हो सकता है. There will be insufficient flow of CSF. Clinically, nausea, vomiting, headache, these are common symptoms. But main symptoms which will be appearing are the cognition, loss of cognition, loss of balance and visual disturbances, along with the disturbed sleep cycle, and there will be seizures. Pressure of the oculomotor in the trochlear nerve nuclei will affect the corticospinal and the corticonuclear tracts. Now coming to the third kind of lesions, which are vascular lesions. The first one is the Sturge Weber syndrome. क्या होगा कि posterior cerebral artery जो कि मिड ब्रेन को सप्लाई करती है वहाँ पे कोई occlusion आ जाएगी, जिसकी वजह से there will be blockage of the oculomotor nerve and the crus cerebri of the midbrain. Just look at this circle part. This won't work. Now what happens?
is supply to the midbrain stops. This will cause necrosis, and along with this the symptoms will be ipsilateral ophthalmoplegia and the contralateral paralysis of the lower part of the face, tongue, arm and legs. Also the eyeball deviates to the lateral side, that is medial rectus का paralysis हो जाएगा. There will be ptosis. Ptosis is symptom जिसके अंदर upper eyelid जो है वो वर्क नहीं कर रहा होता, तो सुपीरियर रेक्टस का पैरालिसिस होता है जिसकी वजह से टॉसिस होता है. देयर इज ड्रॉपिंग ऑफ द आईलिड. प्यूपिल इज डायलेटेड कम्प्लीटली एंड देयर इज लॉस ऑफ अकोमोडेशन. ये किस वजह से होगा? पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस. The parasympathetic nucleus. The second vascular lesion is the Benedict syndrome, which occurs when there is occlusion of the posterior cerebral artery causing the necrosis of medial lemniscus and red nucleus of the midbrain. इस पिक्चर में देखें रेड न्यूक्लियस हाफ साइड का ऑक्यूपाइड है और थोड़ा आधा जो है वो मीडियल लेमिनिस्कस भी ऑक्यूपाइड है. इसके कंसिक्वेंस में होता ये है कि कॉन्ट्रालैटरल हेमी एनेस्थीसिया हो जाता है और कॉन्ट्रालैटरल साइड के जो लिम्स हैं उनकी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होना स्टार्ट हो जाती है. व्हाट इज़ कॉन्ट्रालैटरल हेमी एनेस्थीसिया? इट इज़ द इनएबिलिटी टू टच सेंसेशंस, मतलब अपोजिट साइड की टच सेंसेशंस नहीं आएंगी. सो फार ये कंक्लूड किया गया है कि पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के जब अक्लूजन होती है तो मिड ब्रेन की दो चीज़ें अफेक्टेड होती हैं. दो सिचुएशंस में जिसमें नेक्रोसिस ऑफ द ब्रेन टिश्यू होगा तो ओक्यूलोमोटर नर्व और क्रस सेरेब्रा ऑक्यूपाई जब हो जाएगी तो दैट इज़ कॉल्ड द वेबर सिंड्रोम. और जब नेक्रोसिस ऑफ ब्रेन टिश्यू होगा जिसके अंदर मीडियल लेमिनिस्कस और रेड न्यूक्लियस ऑक्यूपाइड हो जाएगा तो उसे कहेंगे हम बेनेडिक्ट सिंड्रोम.